And this will really help you if you want to save yourself from any kind of disappointment, if you want to strengthen your understanding of people, and if you don't want to get sucked around into those negative patterns. Hi guys, this is Varchasvi Gupta and you're watching Beyond the Visible. So, let me start by introducing myself. I am originally from Chandigarh, India. So, any of your Chandigarh people out there, say hi in the comment section. I am 21 years old. I study at the Sauder School of Business at UBC Vancouver. But enough about me. Let's dive straight away into the topic. So, today I'm going to be sharing one of my core concepts, one of my core principles of living, and it has really changed the way that I see life, that I see situations, and how I see people in general. And this will really help you if you want to save yourself from any kind of disappointment, if you want to strengthen your understanding of people, and if you don't want to get sucked around into those negative patterns which create a sort of loop in your life and end up depleting all your energy. Let's start. So, the core idea behind this is the power of subtext. I have noticed from a very early age that whatever people say, it usually has a hidden meaning behind it. That if I'm saying something internally, I may mean something else. That when people speak, they are usually imagining themselves in your situation and analyzing everything, because there's no other perspective that we know except for ourselves. But the thing to realize is that you are not in their position, right? कि आप उनकी जगह नहीं हो, आप वो decisions नहीं ले रहे हो, आपकी life उस पे dependent नहीं है. So it's very easy to give a judgment from a third person perspective. So why should we look beyond the visible? The more you understand people's subtext, the more it will help you be less disappointed in life. It will make your perception of life and people in general a lot better. And honestly, पहले मुझे लगता था कि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम सोचना, इतना ज़्यादा चीज़ों में घुस जाने से would I become like a cynical person? Because sometimes people are genuinely doing good things. From my side, कि when I do things, there's not usually a hidden intention. कभी कभी yes, I would say yes, but not always. But when you get into this habit of looking everything so deeply, sometimes you do tend to get cynical. So you need to realize is that thin line between being a cynical person and being a rational person. A rational person analyzes every situation, yes, but they don't automatically lean towards the negative side. But a cynical person tends to lead towards a more negative perspective, right? So we don't want to be cynical, we just want to be more rational. So let me tell you why I think this approach matters. We are all born with love inside us. We come into this world because of love, and we don't want to leave this world because of love. I'll just take my mic this way. We do feel love as a constant emotion, but hatred is something that we learn over a period of time. It is not something that comes very natural to a person, it is a taught emotion. And with the current situations, I feel like hatred has exceeded a lot of love that used to be here. But as we grow, we realize that it's also important to understand people's intentions behind what they're doing. I feel like as girls, we learn people's intentions from a very early age. This is something that was taught to us by our parents, by the society, by our education system. We learn to perceive what is somebody's intention from a very, very, very early age. But वो हमें समझ भी इतना ही आता है इन रिगार्ड्स टू आवर सेफ्टी. मेरे साथ तो इनफैक्ट बहुत बार हुआ है कि आई थिंक कि हाउ कैन समबडी डू दिस, लाइक हाउ कैन दे थिंक लाइक दैट. But if you cultivate the habit of looking beyond the visible, you don't get blindsided. Because
आपको शुरू से आदत हो जाती है लोगों का इंटेंशन समझने की rather than looking at their words. And this is also really important because then you stop obsessing with people in powerful positions, because you realize that at the core everybody is human. Everybody wakes up and nobody wants to like just do life is hard. आप सुबह उठते हो, आपका हर वक्त मन नहीं करता, आपको हर वक्त मोटिवेशन नहीं होती है, but you push and you keep going for the sake of discipline, कह लो, for your goals. I have seen so many video edits of celebrities, and they are people doing all of these things. How can you just be so deeply involved in somebody else's life? Like वो भी एक इंसान ही है, वो भी सुबह उठते हैं, उनका भी काम करने का मन नहीं करता, उनका भी वर्कआउट करने का मन नहीं करता। इवन फॉर द फिटेस्ट पर्सन पॉसिबल उनका भी नहीं मन करता बहुत चीज़ें करने का, जैसे हमारा नहीं होता है। तो ये कोई बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव लर्न द आइडिया एंड दे हैव कल्टिवेटेड द आइडिया ऑफ डिसिप्लिन कॉन्टिन्यूसली इन देयर लाइफ, सो दे आर इन दैट पोजिशन। येस, आप उनकी हार्डवर्क की तारीफ करो, आप उनके सक्सेस को लेकर खुश हो, विच इज़ रियली नाइस, आप करिए, but don't get obsessed with people in powerful positions and don't get easily impressed by people. So, what sets you apart in life is your perception of life, how you see it, and how do you want to live your life. सबसे पहले I would tell everybody to have a good aim and a good goal in life. Without an aim, आप aimlessly चीज़ों पर अपनी एनर्जी डालते रहते हो विदाउट नोइंग कि क्या वो आपके बिगर लाइफ गोल को सेटिस्फाई कर पाएगा, कि अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो क्या वो आपके बिगर गोल से अलाइंड है। ऐसा नहीं होएगा कि एक दिन आप उठोगे एंड सडनली सब अच्छा हो जाएगा या आपकी लॉटरी लग जाएगी। सो रेयर, नहीं हो पाता। सो वेदर यू बिलीव इन गॉड, whether you believe in science, or whether you believe in both of those things, or whether you believe in nothing, one thing which I feel everybody believes in is we are all made up of energy. Everything around us has energy. When people say उसकी वाइब अच्छी नहीं है या उसकी एनर्जी अच्छी नहीं है, वो इतना इजीली पता कैसे चल जाता है। You can't hide your intentions, you can't hide that bad energy, वो सामने दिख ही जाती है। और अगर वो गुड एनर्जी भी है ना, then also वो भी बहुत clearly आपके सामने दिखता है। Learning to read that energy is the heart of looking beyond the visible. Because एंड मोमेंट पर आपको ये नहीं लगेगा कि ये कैसे हो गया, राइट? आपको सब समझ आएगा कि ये कैसे हुआ था। मैंने अभी यहाँ रिसेंटली एक साइकोलॉजी का कोर्स लिया था, उसमें देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट पीपल हु आर बेटर जज ऑफ कैरेक्टर्स टेंड टू हैव अ हैप्पियर लाइफ, बिकॉज they don't get that, they don't get disappointed that often, इसीलिए वो ज़्यादा खुश रहते हैं। उनको पहले से पता है कि कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा इंसान बुरा है, सो वो कोशिश करते हैं हमेशा कि अपनी लाइफ में हम गुड एनर्जी ही रखेंगे और जो लोगों की एनर्जी जेन्युइनली अच्छी है सिर्फ उनके साथ दोस्ती करेंगे या उनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। सो हाउ टू बिल्ड दिस स्किल, राइट? अब मैंने इतनी सारी कहानियां तो बता दी कि ये क्यों ज़रूरी है, बट इसको हम कैसे डे टू डे लाइफ में बिल्ड कर सकते हैं। सो आई हैव written some steps which I took, which I think might help you. So सबसे पहले दूसरों की गलतियों से सीख लो, through books, through lectures, through podcasts, through videos. Learn from other people's mistakes. समझदार इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है, क्योंकि वो खुद भी गलती नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट वेस्टिंग टाइम टू मेक अ सिंगल मिस्टेक। द सेकेंड वे इज टू लर्न फ्रॉम लिव्ड एक्सपीरियंसेस, कि आप गलती करो, कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो जाती है, राइट? एंड अगर आप उससे सीख कर उस एक्सपीरियंस को सुधार लो तो आप वो गलती दोबारा कभी नहीं करोगे। लेकिन इफ़ यू डोंट लर्न फ्रॉम योर लिव एक्सपीरियंसेस एंड यू ऑल्सो डोंट लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक, देन आप मूर्ख, मैं ये बोलूँगी, और मैं भी बहुत बारी मूर्ख रह चुकी हूँ। इसमें कोई शर्म नहीं है, उसको एक्सेप्ट करो और बदलो। द थर्ड थिंग इज लेट लाइफ टीच यू द हार्ड वे। जो लाइफ हार्ड वे सिखाती है ना, वो बहुत बुरा सिखाती है। और पर्सनली, मतलब
टू अशेम टू एडमिट, बट मैंने भी हमेशा थर्ड अप्रोच ही यूज़ करी है, बट दिस इज इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म अप्रोच, दिस गोज फॉर लाइक फ्यू थिंग्स, राइट? कि आप कहीं कहीं रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर आप इसको अपनी जनरल लाइफ अप्रोच बना दो, यू विल गेट डूम्ड. DOOMED. Not for the weak. आई वॉन्ट टू बिलीव द बेस्ट इन पीपल. मैं 90% ऑफ द टाइम्स लोगों में हमेशा अच्छा ही ढूंढती हूँ. मैं कभी ऐसे नहीं सोचती कि इसके पीछे कोई हिडन इंटेंशन होगा या इसके पीछे कोई हिडन मीनिंग होगा. एंड दैट्स व्हाई आई गेट डिसअपॉइंटेड मोर ऑफ. लर्न टू सी पीपल्स intentions rather than their words. Their words may be saying A, but their intentions are B, C, D, E, F, G, H. So, some of the practical tips that I have learned through my own experience, that how can you protect your energy and how can you actually cultivate the habit of looking beyond the visible. सबसे पहली tip, pause and detach. Learn to take a deep breath and step away from that situation, और उसको एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो. समटाइम्स लड़ाई में, सैडनेस में या बहुत खुशी में, जो जो भी इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होते हैं, राइट, उसमें हमारा रैशनल कहीं ना कहीं गुम जाता है. द बेस्ट वे जो मैंने सीखा है करना वो ये है कि दैट आप अपनी बात भी देखो और आप दूसरे इंसान की बात भी देखो, एंड देन रियलाइज कि रैशनली क्या सही है. तो आजकल मैं ऐसे ही करती हूँ. आई मेक अ प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट आई एम डिसाइडिंग टू डू, एंड देन आई सी दैट विच साइड आउटवेज द अदर. एंड बहुत ऐसे डिसीजंस होते हैं जो मेरा दिल से कभी करने का मन नहीं करेगा, लेकिन उसकी प्रोज की लिस्ट इतनी बढ़िया है ना कि अगर मैं ना करूँ तो मैं पागल हूँ. इसीलिए पागल मत बनो. एंड जो लोग बहुत इमोशनल है ना, सिर्फ वही धोखे खा रहे हैं, वही दुखी रहते हैं. तो थोड़ा सा रैशनल हो जाओ. चालाक मत हो, रैशनल हो. डोंट एक्ट ऑन एवरी इमोशन विल बी माई सेकेंड एडवाइस. नॉट every feeling needs a reaction. Save your energy. Honestly, nothing deserves your 100% attention unless it is linked to your goals. If you're feeling sad and you keep on thinking that, I am feeling sad, मैं ये नहीं कर सकती, I don't want to do this, and you stay with that emotion for too long, that becomes a part of your personality then. एक बार those are just feelings, they are just passing thoughts. खुश इंसान वही है जो हर सिचुएशन में चिन अप करे एंड बोले इट्स ओके, व्हाटएवर जो भी आएगा आई विल फेस इट. Practice gratitude and intention would be my third advice. Honestly, I'd really like to vouch for this. Please, please, please invest your energy into something divine. एक ग्रैटिट्यूड होना बहुत 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 ज़रूरी है. एवरी डे कभी ना कभी कोई एक ऐसा मोमेंट ले आओ जब आप ग्रेटफुल हो सको कि थैंक यू, आज मैं उठी, आज मैं ये कर सकी, आज मेरा दिन बढ़िया गया. या अगर किसी मुसीबत से आप बच जाओ तो वहाँ पे थैंक यू गॉड. मतलब आई नो इट फील सेल्फिश कि सिर्फ मुसीबत के टाइम किसी को याद करना, राइट? लेकिन कभी तो याद करो, कभी तो याद करो. इट विल रियली हेल्प यू एंकर योर लाइफ, क्योंकि बहुत सिचुएशंस आएंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, एंड उस पॉइंट पर हेल्पलेस फील करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि जो आपके हाथ में नहीं है आप किससे मदद मांगोगे. तो उस पॉइंट के लिए इट्स बेस्ट टू ट्रस्ट समथिंग डिवाइन, कि जो होगा अच्छे के लिए होगा. नंबर फोर्थ, स्टॉप ओवर क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ. ये मैं खुद को भी बोल रही हूँ. स्टॉप ओवर क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ. Everybody is living life for the first time. Mistakes are bound to happen. Mistakes are a part of life. Mistakes are a part of the progress. Number 5, जो मैंने पहले भी बोला था, don't get over impressed by people. Nobody's
better than you. ये जो somebody is better than you का कॉन्सेप्ट है ना, ये किसी बहुत एक एनवियस बंदे ने ही बनाया होगा, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि nobody can ever be better than you, क्योंकि कोई आपकी तरह है ही नहीं। मेरा अगर कोई 100% क्लोन हो और वो मुझसे बेटर करे, तो मैं कह सकती हूँ कि यस, शी इज बेटर देन मी। किसी ने आपकी जैसी लाइफ सिचुएशंस नहीं देखी, nobody has experienced life the way that you did, nobody has had the same upbringing, even your siblings, कैसे इतना फर्क आ गया, राइट? सेम पेरेंट्स, सेम सिचुएशंस, सेम चीज़ें, कैसे फ़र्क आया? फ़र्क आया है परसेप्शन से, फ़र्क आया है लाइफ एक्सपीरियंसेस से। सो डोंट गेट इजीली इम्प्रेस्ड बाय पीपल। इवन द मोस्ट सक्सेसफुल, इवन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल बहुत जेनरिक एडवाइस देते हैं सब लोग। कोई आपको एकदम दिमाग खोल के बिल्कुल ऐसे कोई एडवाइस नहीं देगा। वो भी एडवाइस वही देते हैं जो सबने करी हुई है। At the end of the day, life is complex. Some people genuinely don't have love to give. They have given enough love already and अब उनके पास नहीं है क्षमता. Some people just have genuine envious energy. You can't compete with those things. What you can change is your energy, that you don't get affected by it. You can control is your expectations and the way you perceive life. खुद से एक्सपेक्टेशंस रखना आसान है, क्योंकि आप ही हो करने वाले और आप ही हो बिगाड़ने वाले। एंड आई हैव रियलाइज्ड दिस बाय लिविंग अलोन, दैट देयर इज नोबडी टू ब्लेम। कोई आपका ब्लेम ले ही नहीं सकता। सो protect your energy, direct it inwards, and look inside yourself and look beyond the visible. If this video resonated with you, drop a like, drop a comment, and share this video with your friends or your family. And keep looking beyond the visible. Bye, guys. See you until next time.